What are the main policies? Liberalization, privatization and globalization. So firstly we discuss about the liberalization. Write down. Prior to 1991, PRIOR to 1991, there were large number of government restrictions in India. There were large number of government restrictions in India in the areas of licensing, in the area of licensing, import and export trade, dealings in foreign exchange, etc. इट मीन्स क्या है कि 1991 से पहले क्या था कि बहुत सारे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे काफ़ी चीज़ों पर, जैसे कि लाइसेंसिंग पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे या फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करने पे। तो उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट के बहुत सारे क्या थे, रेस्ट्रिक्शंस थे। इन जुलाई 1991 a package of economic reforms was announced which marked the beginning of process of liberalization। तो 1991 जुलाई के बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या किया गया, अनाउंस किया गया, और तब जो पहली प्रोसेस आई वो क्या आई, लिबरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, लिबरलाइजेशन मींस removal of entry and growth restrictions on the private sector, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट लाइन, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स reduction of government controls and greater autonomy of private investment। It means that लिबरलाइजेशन ने क्या किया कि जो भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट कंट्रोल थे, या तो उनको कम कर दिए या तो बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ऑटोनॉमी, इट मींस दैट फ्रीडम मिले। ठीक है, ऑटोनॉमी मींस फ्रीडम। नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू, under this process business is given free hand
is allowed to run on commercial lines. To run on commercial lines. नेक्स्ट पॉइंट करिए, द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन. इट मीन्स व्हाट आर द पर्पस और व्हाट आर द मेन मोटिव ऑफ लिबरलाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री. The economic potential of the country by encouraging private sector and multinational cooperation to invest and expand. हमारी इकोनॉमी की पोटेंशियल थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया, खोल दिया. कैसे, किसके थ्रू, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं और मल्टीनेशनल ऑपरेशंस हैं, उनको एनकरेज किया कि वो हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में आके क्या करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस much more competition into the economy. To introduce much more competition into the economy and creating incentives for increasing efficiency of operation. लिबरलाइजेशन के थ्रू और क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में कंपटीशन क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गया. ठीक है. जब बाहर की अदर कंट्रीज भी अगर हमारी कंट्री में क्या करती है, अपने बिजनेस को रन करती हैं, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन इंक्रीज होगा एंड साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी क्या करेगी, अच्छे से सर्वाइव करेगी. ठीक है. Next heading, the economic reforms taken by the government under liberalization include the following. It means that what are the economic reforms or what are the changes which is taken by the government at the time of liberalization. ठीक है. यानी कि जब लिबरलाइजेशन आया या लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस किए. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. Second, financial sector reforms. Third, tax reforms. Foreign exchange reforms. Trade and investment policy reforms. यानी कि लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों में क्या किया, चेंजेस किया. ठीक है. फर्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. In order to make necessary reforms in the industrial sector
July 24, 1991. The various measures, the various measure under industrial policy reform, the various measure under industrial policy reforms include, write down headings like A, B, C. Include, first point, reduction in industrial licensing, reduction in industrial licensing, licensing. It means reduction in industrial licensing means no license were needed to set up new units, expand or diversify the existing line of manufacture. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अब कोई भी न्यू यूनिट क्या करेगी, मार्केट में एंटर करेगी और एनी न्यू एग्जिस्टिंग फर्म और किसी भी एग्जिस्टिंग फर्म को रन करने के लिए, ठीक है. सो देयर इज नो नीड ऑफ लाइसेंसिंग एट द टाइम ऑफ reduction in industrial licensing. Next, decrease in role of private sector. Decrease in role of public sector. Decrease in role of public sector. Under liberalization, government also decreases its role. Next, de-reservation under small scale industries. De-reservation under small scale industries. Write down, in many industries under de-reservation, in many industries the market was allowed to determine the prices through forces of the market. It means that under liberalization, government also allowed to private sectors or to other businesses to set up their prices according to them. पहले क्या रूल होता था, लिबरलाइजेशन से पहले हर एक चीज को कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ही क्या होता था, रोल होता था. लेकिन अब लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ही कम हो गया. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर एक चीज में या तो रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए या तो बिल्कुल ही रिमूव कर दिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट.
is that under liberalization, government made monopolies restricted trade practices act, in which through they eliminated there are so many things like merger, amalgamation, acquisition. Okay, so they eliminated these type of restrictions. You know what is merger? Nobody knows. What is merger? Merge करना. It means when two companies combine each other. ठीक है? जब दो कंपनीज आपस में मिलकर एक कंपनी चलाती हैं उसे क्या बोलते हैं? Merger. And acquisition. Acquisition. When one company acquire the another company. जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन. Now there are so many terms like takeover, amalgamation. Okay. Next is privatization. Next is privatization. Sorry. First, industrial sector reforms completed. Second is financial sector reforms. Financial sector reforms. Right now, financial sector includes financial institution like commercial banks, investment banks, stock exchange operation, commercial bank, investment bank, stock exchange operation, and foreign exchange market. These financial sector in India, where is your mask? These financial sector in India is controlled by the central bank. Dash the sign. Central bank means Reserve Bank of India, RBI. So the reforms included, next line, the reforms included, first point, change in the role of RBI. Change in the role of RBI means before the liberalization there is a big role of RBI because it's a government of India bank. Then after liberalization government removed the role of RBI to take many decisions. ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज लाने के लिए, ठीक है ना, ये अपने बिजनेस को रन करने के लिए पहले क्या था कि गवर्नमेंट का रोल लेता, तो क्या करती थी उस टाइम पे आरबीआई के सारे डिसीजंस क्या करती थी, लेती थी. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन आरबीआई का बहुत जगह से अपना रोल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, origin of private banks. At the time of liberalization there are so many also private banks which run in our economy. Before liberalization there is no any private banks, but after the liberalization there are so many banks which are set up. Okay, like ICICI, and there are so many other private banks. Private
before liberalization there is a limit of foreign investment, okay, but after the liberalization the limit should be increases. Next, tax reforms. Next, third point is tax reforms. Tax reforms. Tax reform refers to reform in government taxation, reform in government taxation and public expenditure policies and public expenditure policies which are collectively known as fiscal policy, which are collectively known as fiscal policy. As you all know what is the meaning of reform? Restart होना या change होना, ठीक है. तो tax reform means टैक्स का दोबारा से रिफॉर्म होना या टैक्स में चेंजेस आना, ठीक है ना. तो आफ्टर लिबरलाइजेशन there are so many government taxation policies, public expenditure policies which can be reformed again, ठीक है ना. Taxes are of two types. Direct tax and indirect tax. Direct tax and indirect tax. First, direct tax. It consists of taxes on income. It consists of taxes on income of individual as well as profit of business enterprise For example, income tax, bracket में tax on individual income. इनकम टैक्स किस लिए होता है? इंडिविजुअल की इनकम पे जो टैक्स लगता है, ठीक है. एंड कॉर्पोरेट टैक्स taxes on profit of companies. और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो भी कंपनीज का प्रॉफिट होता है उस पे जो टैक्स दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स. Indirect tax refers to those taxes. Which affect the income. And property of person through their consumption expenditure. Indirect tax are generally imposed on goods and services. For example, GST, goods and services tax. So clarify the difference between the direct tax and indirect tax. Direct tax is the tax which is applicable on the income of the individual or profit of the companies, and indirect tax is applicable on goods and services which is consumed by individuals. Okay, clear the difference?
important reforms made in the foreign exchange market. First, devaluation of rupee. Devaluation of rupee. Write down under. Devaluation differs. Devaluation means decrease the value. किसी चीज की वैल्यू क्या हो जाना, कम हो जाना. Devaluation refers to reduction in the value of domestic currency by the government. To overcome balance of payment crisis. The rupee was devalued against foreign currencies. This led to an increase in the flow of foreign exchange. Next, market determination of exchange rate. Write down under the government. Market determination of exchange rate. The government allow rupee value to be free from its control. As a result, इसका क्या रिजल्ट आया? Market forces of demand and supply. Determine the exchange value of Indian rupee in terms of foreign currency. Now next topic is trade and investment policy reforms. Which we discuss in another lecture.